So yeah, before we should actually begin this webinar, I didn't want to take this webinar in a go where I should keep on talking and sharing the key highlights about both these debate competitions and moot court competitions, their importance, and their key factors, which for a law students in your law school. Rather, I want to make it a little more interactive. Right. So instead of just keeping the scenario where you guys will in the end ask the questions, at any point of time, if you have any questions, doubts, queries, you can just simply raise your hands. The moderator will unmute you and you can simply ask your question. Right. That will be a better way of interaction. Right. So yeah, before just beginning, just get me an idea that how many of you are freshers? Like, acha, rather than I'll reframe it. How many of you have been participated in a moot court competition earlier? Yeah, just give me a second. You can just simply raise your hand by and tell me that how many of you have a prior mooting experience. Okay. Okay, great. That's great. That's great. Yeah, guys, just give me one. Okay, yeah. So, yeah, moderator, I'm unable to see the chat. So, whenever there is a question or a participant raises a hand, just kindly unmute him or her so that he can ask their questions. Okay, sir. All right. Okay, yeah, you can just stop raising your hand now. Yeah, that's great. So important why moot court competition and debate competitions play so crucial role in your law schools, right? As majority of you might aware that during your law schools, in order to get good pre-placement offers, PPOs, or let's say big cracking big internships, these are the two prerequisites or essentials which are really important in your curriculum vitae or let's say resume. Not only the professional world, and it is their domain is just not limited to the CV or resume part, but also it is very useful in your professional life as well as a law student or as a lawyer in the coming future. Right. Have you ever wondered that during your while we make our CV, the debate competition and moot court competition are extracurricular activities. For example, if we as a law student, many people send their resume to the reputed lawyers and the renowned law firms. Let's say we consider example of AZB, Khaitan or the any tier one law firm. Many of them send the resume. What make a resume or a CV different? Why a HR or a big law firm hired you? These are the competitions, these are the extracurricular activities which make you outshine the other applications or applicants applying for a similar job or internships. Right. And that is where the essence of these extracurriculars comes into play. Today's whole webinar will be based on these two scenarios. We'll discuss both about debates and moot court competition, but our prior interest will be laid down on the moot court competitions. Priority wise, also, moot court competitions are much more important than debate competitions, considering the professional part where we could actually talk about the internship grabbing and the getting a job in the good law firms. Right. So, yeah, let's start with the first hand, which is debate competitions. Right. So first question comes in our mind that why one should learn debating. Being a law student, what should debating play? Why is debating so important? Majority of all of you are from different law schools, maybe from different years. You have a debate society in your colleges. Debate is really essential for a law students. The first thing is that connecting oratory with intellect. Look, what is the difference? I am at one point of time maybe a good public speaker, but at the same time I might not be a good orator, and that is what make me a different.
Okay, guys, are you able to see the PPT? Yeah, you can just drop some messages in the chat box. Oh, okay, okay, okay. I guess there is some issue. Just give me a second, I'll correct it. Are you able to see the first slide? No, it's the last slide. You need to Okay, change okay. this. Yeah, actually, I'm able to see the first slide. Not an issue. Just give me a second. Yeah, now it's okay. It's the first slide. Okay, okay, great. Yeah, just I'll make it full screen. Okay. So I are you guys able to see the screen now? Yeah, it's visible. Okay, okay. So which page is visible? Is it the first page or the second page where two essentials of law school is written? It's the first page. All right, all right. Right. So now is it visible now? Webinar series on debating and mooting. Yeah, that is visible. Okay, that's great. Right. So we were discussing that the essentials of two essentials of law schools, which are debate competitions and the moot court competitions. Right. So all of you have debate society in your law schools in various years, and that is where the essence of debate competitions comes into play. Right. The first thing, which is connecting oratory with intellect. Now that is mention this thing. Right. We may be a good public speaker, at the same time we not be a good debater. Debating is a way different from a normal public speaking, because public speaking domain is a quite a big domain where an anchor, a storyteller, a poet, and all sort of public speaker who addresses the audiences at large may be included. But at the same time, debating is way more different from the normal public speaking scenario. In debating, we construct our arguments, we apply the intellects in the small time frame under the quite a good pressure in various format. We learn to impromptu speaking, right? Compiling the argumentation, structuralizations, our knowledge, static knowledge, and all other things when we compile with our public speaking, that makes you a good debater. And that is where the essence of debating comes into picture, right? The second point, which is personally my favorite, is learning the thrill of public speaking. Right. You might have seen a good public speakers and debaters addressing the audience in full flow. Debating is like a, what I say, gives you a strong thrill. When you address the audience, there is an opposition team. The scenario becomes such a great where you just enjoy the particular room where you're debating, right? And that is the real essence of debating, right?
Of course, debating expose you to more and more people. You might not be aware debating in itself have a different word, not only at the national level but at the international level as well. Many of you might aware that in debating also there are various circuits. If we talk about at national level, we have different debating circuits. We have North Circuit, we have Central India debating circuit, then we have South Indian circuits. At international, we have European debating circuit, Asian debating circuit, right? And you will not be surprised to hear that currently the persons who are heading these circuits, if we talk about the Asian debating circuit, is none other than just a third year student pursuing his arts degree from the Delhi University. And that is the essence of debating. You can just imagine that at just in your third year or your undergrad degree while you're pursuing, you can head such a big organization, which is Asian debating circuit is the biggest debating circuit if we talk about in whole Asia, all the countries, right? So you can just imagine how much it could actually contribute and make you a different from the crowd, or a normal law student if you just do really really well in debating circuits. How to do these things, how to just excel in debate competitions, what are the actual and different debating formats, we will be discussing those things as well, right? Then creativity and expression, of course, debating, you need creative arguments, expression and gestures, we'll be telling in the next slide, right? With this, moving to the types and formats of the debates, right? One problem I think which most of you suffer, that you might be a good speaker, you might have good knowledge, but when you actually come around various formats of debate, you might get a little confused. And that is where you found yourself in a corner or in a doubtful room that whether I actually should participate in a debate. For example, if you heard Asian parliamentary debate for the first time, you might be a good speaker, you might have quite a good knowledge, but of course, if you are participating in Asian parliamentary debate for the first time, you feel a little uncomfortable. There is a slight thought inside your mind where you think that a participant who have quite good experience in this particular format might do well and better than me. And that's a genuine thing we should come in your mind, and that's not anything wrong, because that's a genuine thought. If a person is participating in these formats from quite a long time, they are well aware about these formats. And for a fresher who are participating in these formats, he first need to understand the nuances and actually the rules of these debating formats. I can assure you that in next 15 minutes, whatever the formats are written, you can see on the screens, and that are in total all the formats of the debating. You cannot find any other format out of this list currently mentioned on your screen, right? You might see there's a miscellaneous form. What is that form? I will also discuss about that particular. So let's start with the first format of the debating, which is Asian parliamentary debate, right? So just by simply raising your hand, just give me an idea how many of you are aware about the Asian parliamentary debate. Have you ever heard about this format, or it's just an kind of a alien theory for you? Right. If any one of you have heard about the Asian parliamentary debate, just yeah, okay, I see someone is mentioning alien theory. All right, you can just simply raise your hand if any one of you have heard about Asian parliamentary debate currently in the meeting. All right, yeah, it's not an issue. Okay, so Asian parliamentary debate is one of the most common debating formats you see across at broader level, right? The majority of tournaments which currently organized by various law schools, there are various reputed formats, whether by various institutions. The most common debating format is Asian parliamentary debate. It might look very complicated by its name itself, like Asian parliamentary debate seem like some international debating format, but it's not that complicated. Asian parliamentary debate is a simple debate where one team go for the motion, other team will go against the motion, and it's a 3 versus 3 parliamentary debate, right? So if I have to make you understand in just few seconds, that simply understood that in Asian parliamentary debate, instead of one person going against for and against the motion, a team go against each other. A team consists of 3 person which go against the other 3 persons, and there is a 3 motions given to each teams, right? For example, team A and team B are going against each other, right? Before beginning the debates, there shouldn't be any specific topic, rather 3 topics are being given to both the teams. Both the team rank the topic on the basis of their preference. For example, I feel that topic A is easy, so
In my ranking, I will frame topic A at a slight higher rank. Then I'll see that topic B is quite easy. Then I'll frame topic B, and the topic which I feel most uncomfortable or difficult, I frame it in the last. Right. Based on the ranking, both the teams give a topic is chosen by the panel of judges or the organizers. Right. On that particular topic, both the teams start debating. Right. Now, Asian parliamentary debate, there are little bit terminologies involved in this particular format. Though it's a three versus three parliamentary debate, but one team is called side government and the other team is called side opposition. Right. Numerous times you might have also heard about, instead of government, the team favoring the motion is called side proposition. Right. The other team, on the other hand, will always be called as side opposition. Right. So this is where, when it comes to the speaking rule, right, there's a slight variation, and this is where a little complication begins, but it's very easy to understand. Right, there are three speakers in each team. Each speaker have a certain roles to play. If we talk about Asian parliamentary debate, for let's example, let's talk about government side first. Government side have three speakers. The first speaker will be the prime minister. Second speaker will be called as deputy prime minister, and the third speaker will be called as whip. Moderator, can you just type these terms in the chat so that we can just remember it? So the first speaker from side government is prime minister, second is deputy prime minister, and third one is whip. And the same goes for opposition. There is leader of opposition. The second speaker from opposition is called deputy leader of opposition, and the last speaker is opposition whip. Right. So these are the three speakers from side opposition. Now, when it comes to different role, the first speaker from both the sides will simply have a role of defining the motion. For example, let's take a hypothetical topic. Okay, let's take this. This house believes that Donald Trump should be Donald Trump should next year participate in elections, general elections from India. Right, just a hypothetical topic. Right. So from the side government, the team which is participating or representing side government will simply go ahead and talk about and describe the motion. Right. They will just define the motion, like what are general elections all about, who is President Trump, why he should actually, right, setting a base and giving the base to the whole debate is the work of the first speaker. The second speaker, which is the deputy prime minister, just continue the argument of the first speaker, and secondly, he will rebuttals. Right. For example, the chronology in which the speakers come will be: the prime minister will go first, the leader of opposition then comes second. At third place, the deputy prime minister will come. At fourth place, the deputy leader of opposition will come. And similarly, then government whip and then opposition whip. You found this zigzag motion sort of a thing, right? So first speaker from government, then first speaker from opposition, then second speaker from gov, second from opposition, then third speaker from gov, and third speaker from opposition. In this way, these formats work, right? So first two speaker from government and first two speaker from opposition can anyhow give new arguments. But the best part and most tricky part is when we talk about the whip, the third speaker, either from the government or the opposition, they cannot anyhow say new points in a debate. The work of the whip is to simply go ahead and rebuttal the whole set of arguments. A whip can never give new points in Asian parliamentary debate. Right. I guess someone has a doubt. Okay, moderator, can you unmute Realme One? Someone is joined by Realme One name. Uh, Sai, are you there? Realme one, you can unmute yourself. Okay. Yeah. So you have a doubt? No, no. Achha, okay, your hand was raised. It's okay. It's okay. Oh, sorry. All right. You can just simply unraise your hand if you don't have any doubt. Right. So we are talking about the position and the position whip. Right.
and the role of a whip in Asian parliamentary debate. Right. Right. Whether it's come to opposition whip or it's a government whip, a whip can never give new points in this particular format. What's the role of debate? What is the role of whip in this debates is just simply figure out the whole speech, just give a brief about whole speech from his government and just rebuttal all the arguments. In short, if I have to just frame it in a single word, just destroy the case of opposition by your rebuttals. No new points. If there is a new point, there is slight negative marking for the same. So I hope the Asian parliamentary debate is clear to everyone. Right. You can just drop yes, no in the chat box. If there is any doubt, we'll figure that out as well. Right. Just quickly drop some messages in the chat box. Yeah, great. So yeah, with this moving to the second format, that is British parliamentary debate. Now, if you understand the Asian parliamentary debate quite well, just remove one speaker from the Asian parliamentary debate, the mid speaker, which is deputy prime minister and the deputy leader of opposition. That is all about British parliamentary debate. In British parliamentary debate, a team consisting of two person go against a team consisting of two person. But at the same time, what happens in Asian parliamentary debate, one team will go against another team, right? But in British parliamentary debate, four teams simultaneously go against each other, right? So team A versus team B versus team C versus team D, provided that all the teams have only two speakers. Right. So that makes British parliamentary debate a bit different from the Asian parliamentary debate. But yeah, rest remaining all the roles are the same. When we talk about the role of first speaker, then the second speaker will work as whip. The first team, team A, will be called as opening government. The second team will be called as opening government. Closing government. Third team, opening opposition, and the last team is closing opposition. Right. More or less, remaining things are same. I guess there are some questions in the chat. Mm, Okay, so I'll use a bilingual language now for a better understanding. Someone just dropped. Right. So that is what so remaining three format when it comes to conventional debate, turncoat debate, elocution debate. ये तीनों debate is almost let's say a bit similar type of structure. ठीक है, लाइक एशियन पार्लियामेंट्री डिबेट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टो डिबेट है. यू गेट द मोशन, टॉपिक मिलते हैं बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टो, लाइक सम 30 minutes बिफोर द एक्चुअल डिबेट. बट व्हेन इट कम्स टू द कन्वेंशनल डिबेट, टर्न कोड डिबेट एंड इलॉक्वेशन, इसमें आप लोगों को जो टॉपिक्स मिलते हैं वो मिलते हैं लाइक क्वाइट अ टाइम. स्टैंडर्ड जो टाइम रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 48 hours का रहता है, बट यू विल गेट द टॉपिक समवेयर अराउंड 3 to 4 days. In quite some cases, you will also get the topic एक week पहले around, right? So conventional turn code और elocution में आपके पास काफी समय होता है इन debates को prepare करने के लिए. Yeah, Mantasha Sultana. Yeah, in British Parliament debate, two teams go for the motion and two teams go against the motion. Mhm. Yeah. I hope that Mantasha's question answer Priyanshi's question. Yeah. So when it comes to conventional turncoat and elocution, the time frame is more. You'll get quite a good time research करने के लिए, and you can just so winning a conventional debate, I personally feel, is a bit easy than Asian parliamentary and British parliamentary debate. Because Asian parliamentary, British parliamentary काफी impromptu होते हैं, तो आपकी prior knowledge comes into picture. वहीं conventional turncoat इसमें it took some time, right? तो इसमें आप रिसर्च करने का टाइम होता है, देन यू गेट क्वाइट अ गुड टाइम, यू कैन प्रिपेयर योर स्पीच, स्ट्रक्चराइज योर स्पीच. I'll quickly, once I complete all these format, give some tricks and tips how to excel in these debates, right? Since I guess I participate in all these formats and in various format across the India, right? So अब conventional turncoat और elocution के key factors क्या रहते हैं? Conventional debate is simply 2 versus 2. मतलब एक टीम में there will be 2 person, in the other team also 2 person. In one team only one person will go for the motion and against the motion. Let's say if I
and person B is in same one team, and C and D are in other team. So I will be going for the motion, my partner will be going against the motion, right? So one team will speak both for the motion as well as against the motion. Similarly, the other team will also, both the members from the other team will go for the motion as well as against the motion. So एक ही टीम में दोनों लोग for the motion भी जाते हैं, against the motion भी जाते हैं. इस वजह से कन्वेंशनल थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम, राइट? सो या दैट्स इट. कन्वेंशनल डिबेट ऐसा कुछ नहीं होता है कि वन टीम, एक टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट जा रही है. इन टोटल कन्वेंशनल डिबेट का टोटल होता है, इसमें नॉकआउट राउंड्स नहीं होते हैं, फेस ऑफ नहीं होता है. लाइक 40 पार्टिसिपेंट, तो वन बाय वन आप जाके अपनी स्पीचेस देते हो. You will be judged over on the basis of scores you receive at the end of the tournament. Unlike British और Asian parliamentary debate जहाँ पे आपका face off होता है, knockout rounds होते हैं, preliminary rounds होते हैं, एक टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट जाती है. कन्वेंशनल इन टोटल आप पूरे क्राउड के अगेंस्ट, अगर 40 पार्टिसिपेंट है तो a team is against all those 40 participants, right? But provided that in a one team only, in the same team, one person will go for the motion and one person will go against the motion. If it's about preservation of natural resources, so I'll tell why preservation of natural resources is important. My partner will tell why it's not important. It's as simple as that, right? When it comes to turncoat debate, look up, turncoat is really interesting format. You guys can simply guess by its name as turncoat, turn the coat around, right? It's as the name pronounced. In a similar way, the format is itself. So usually the time frame for turncoat debate, you'll get 4 minute speaking time. 4 to 5 minutes is the ideal time, though various organizations, for the sake of making it more interesting, वो time change करते रहते हैं अपने according. Sometimes you'll get 6 minutes, 7 minutes, sometimes time maybe like 2 minutes and 3 minutes as well. So as such कुछ standard time नहीं होता है. It vary by from the organization to organization. So turncoat में, for example, let's say if we consider some topic, let's say boxing should be made the national sport of India. So for the first 1 minute, I'll start my speech and tell that why boxing should be made national sport of India. The judge will make some ring, clap, or some sort of a sound. As soon as that sound is made, I will immediately turn down to the other side of the motion. Right. At the same time, for example, I'm saying boxing is really important. We should give importance to the sports which are not so popularized in the status quo. I'm going in my speech and he claps or makes some sound. Immediately on that spot only, I switch to the other side of the motion. I start telling that no, boxing shouldn't be made national sport. We should instead make other games like, let's say, any other games like skiing, carom, chess, the national sports, right? So that's the fun about turncoat. Immediately switching your sides, like multiple personality disorder, right? So that goes for the turncoat debate. As soon as sound is made, you switch the. In turncoat also, you get quite a good time to prepare because the topics are usually a set of topics, not a specific topics. Let's say 10 or 12 topics are released quite a few days before. Then comes the evacuation. If you remove your teammate from the, let's, if A and B are the teammates, if we remove B from your team, you individually participate and give a speech on a topic which is released 7 days or 5 days prior. That makes the elocution. Now, what's the different thing in elocution, right? All these debate, the content is focused, whether it's Asian, conventional, turncoat, British, but in elocution competition, what matters and what plays an important role, just give me a second. Yeah, what matters and what plays an important role is the way you talk, the way you pronounce, your accent, right? The more dramatized speech you can give, the better storyteller you are, the better participant you can excel in elocution competition, right? Usually the longest format of debating comes in elocution. So few of the more popular tournament which I can remember is, one of them is Army Law College Pune conducts national elocution competition. It holds some winning prize of some 30-50,000 rupees. Right. So I have been there. I've been one of the semi-finalists there, though not able to win. But when you go in these debating competition, you see that how good speakers you receive, right? And that is where you should participate in this debating format, because you can't learn debating just by practicing. The more you participate, the better you observe. Like you see such good speakers speaking, delivering speeches, you can just draw some good things from each speeches.
right? When I was participating, there was some 25 to 30 participants from across 18 plus states. So I remember I have drawn there were some fabulous part in everyone's speech. So what we can do while observing their speech, we can just take one good thing from each speech. Let's say we can, or simply say just copy one good thing from their speeches, and we can save those things for our future tournaments. Utilize those good things, good tricks, techniques, or whatever you can call it, and utilize those things in your coming future tournaments. And that is what elocution is all about. The better storyteller you are, the better participant in elocution competition you are. Now extempore. Many of you guys have seen those reality TV shows like Coffee with Karan and other, where you guys see that there is rapid fire round, impromptu speaking. That is what an extempore is all about. If I pick some random name from the chat, let's say Amrita Soni, just tell me why President Donald Trump lost the US election. And she started immediately telling that why President Trump is losing, right? Immediately, just you provided a topic somewhere around 20 to 30 seconds prior to your debate, and you didn't get any proper time to prepare. You just, whatever you comes in your mind, you go ahead and speak. Now, was it trick in extempore competition? Is never stop. Right. And remember that in extempore competition, the speaking time will not be really high. If you get 30, it's always the 4 times more than the time you receive for preparation. For example, अगर आपको 30 seconds मिले for preparation, the speaking time will be 2 minutes. 4 times of whatever time you receive for the preparation. Approximately यही ratio चलता है most of the tournaments. Right. So extempore के लिए key highlight यही है, never just stop in mid of your speech, because extempore क्योंकि एक impromptu debate है, it's all about not stopping and going in a single flow. Sometimes speak irrelevant things, doesn't matter, but it's better than speaking some irrelevant thing you are not stopping. Right. Include connecting the dots with some random things and just back to your topic will be better than stopping in extempore competition, because anyhow, if you fumbled or stopped in extempore, that will be cost you some good number of marks in extempore. Right. So before I should give you some tricks, just quickly wrap it up the remaining two formats, जो कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस और यूथ पार्लियामेंट्री डिबेट. बोथ द फॉर्मेट्स, ये जो दोनों फॉर्मेट्स हैं, आर सिमिलर इन नेचर. So what happened? All of you are aware about being a law student. आपको international relations के बारे में पता होगा, right? So क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस जो होती है, यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे कंट्रीज अपने डेलीगेट्स को सेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है. उसी का मॉक साइमुलेशन को अगर हम डिबेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो मॉडल यूनाइटेड नेशन बन जाता है. एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस में, जैसे कि इफ यू कंसीडर टुडेज मीटिंग, राइट, अगर मैं सबको एक एक कंट्री अलॉट कर दूं, लेट्स से दीक्षा को मैं इंडिया दे दूं, अभिषेक को मैं चाइना दे दूं, अमृता को मैं पाकिस्तान दे दूं, राइट, एंड देन मैं एक मोशन रेज कर दूं दैट शुड सीरिया क्राइसिस बी मेड बेटर. कैन एन इंटरनेशनल एंड अ गुड पर्सपेक्टिव, किसी कुछ ऐसी वेज निकालो जिससे सीरिया क्राइसिस को वी कैन एक्चुअली स्टॉप द सिचुएशन देयर, वी कैन एक्चुअली इंप्रूव. नाउ यू बीइंग अ डेलीगेट फ्रॉम अदर कंट्री, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है मॉडल यूनाइटेड नेशन में, कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना. यू हैव टू गिव पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द कंट्री यू आर रिप्रेजेंटिंग. इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैं सीरिया क्राइसिस के अगेंस्ट में हूँ, सो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं रखूंगा कि सीरिया क्राइसिस को स्टॉप कर देना चाहिए. What opinion I will put up is the opinion and the policies of United States of America, right? So just amalgamate yourself in the roles you play, the country you play, discuss about their point of view, their foreign policies. Okay, so MUN is really good for all those participants who have good interest in international relationships, right? If you have good interest in IR, then you can definitely go for these tournaments. And the good part and also the bad part depend on the person to person is that इसमें speaking time का कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि आपको 4 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है. Every participant will give hardly 60 to 90 seconds to speak in a single while, right? और जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स नंबर लाइक 60 और 100 होता है, उसमें यू विल गेट अ चांस टू स्पीक लाइक 2 times or 3 times मैक्स. मिनिमम टाइम
at various time you didn't even get a chance to speak in big tournaments. I'm talking about, like अगर MUNs की बात करें तो some of the big tournaments are Symbiosis. Pune conducts one of the biggest MUN tournaments. उसका cash prize somewhere around 1.5 to 2 lakh होता है, right? Then Christ University, I think the tournament is coming in the month of Feb or March, right? It is one of the biggest MUN tournament. I don't know about the online format, how many participants actually they'll get, but yeah, it's one of the biggest modern United Nations at national level. Right. So model United Nations, all those person which you have. So in model United Nations, just if you want to excel in this particular format, just remember one thing. Since you have just hardly 60 to 90 seconds, whenever you have get a chance, don't waste your time to just figuring out or giving background about a topic. एकदम to the point जाना है. Like 90 second में you cannot give background, then you can set up a base, then you can deliver your speech. Just speak to the point. Second thing, structurization करके रखो. ठीक है. Like if a modern United Nation, if I need to talk about Syria crisis, I'll simply tell, like let's say the Venezuela crisis, I'll simply go ahead and say that European Union and other countries are teaming up to uh, distort and bring up policies against Venezuela, causing harm to internal sovereign policy and various other factors. Just give stick to the point and try to bring maximum arguments in those 90 to 60 seconds or whatever time you will get in these formats, right? And that is the good and bad part for MUNs. A person who enjoys speaking for quite a good amount of time will definitely don't like this format. But if you have a that disadvantage, like you don't like speaking for longer time, this format is quite a good and favorable for those candidates, right? Now coming to the last format, that is youth parliamentary debate. Now if model United Nations is like modern United Nations simulation of United Nations, in a similar way, youth parliamentary debates are the simulation of parliament, Lok Sabha, Raj Sabha, state legislative assembly, right? Like in modern United Nations, सब लोग अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. Someone represent Syria, someone represent Pakistan. Youth parliamentary debate में we represent अलग अलग पॉलिटिशियंस को, राइट? तो जब आप पार्टिसिपेट करोगे आपको डेलीगेशन मिलता है, आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है. तो जब पार्टिसिपेट करोगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ऑल दोज पार्टिसिपेंट, ये पॉलिटिशियन, यू विल गेट देयर पोर्टफोलियोज. अब इसमें क्या रहता है यूथ पार्लियामेंट्री डिबेट और एमयूएंस में, जो पॉपुलर पॉलिटिशियन या पॉपुलर कंट्रीज होते हैं लाइक अमेरिका, इंडिया, पॉलिटिशियंस में भी से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये पोर्टफोलियोज बड़े टूर्नामेंट्स में इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट बिग टूर्नामेंट्स, राइट? उसमें आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलता है. If you want to get Narendra Modi, they will, in the entry form or the application form itself, there is a column like experience, prior experience. तो वहां पे आपको अपना prior experience डालना पड़ता है कि इतने मैंने MUN या YPDs करके रखे हैं. Then based on your experience, they will give you the popular portfolio, Narendra Modi and big politicians or big countries. But उसका भी participant कई बार उनको लगता है कि it will be a disadvantageous for them. Trust me, it is not at all disadvantageous. Rather, it's an opportunity. Right. I have seen persons winning the with the portfolios like Azerbaijan, Burkina Faso. You can't imagine that I haven't didn't heard about the foreign policies of these countries. And the person doing the first time MUN representing such countries and politicians, they're able to win those competitions. Right. So it's all about the content, how specific and to the points you are in these formats. More or less, Model United Nations and Youth Parliamentary Debate are slightly of same nature. Now, many of you might be good Hindi public speaker. So if you have a strong hold on Hindi language, तो you can go for youth parliamentary debate. Though youth parliamentary debate का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ हिंदी में होती है, वो bilingual है, right? So अगर आपका हिंदी पे कमांड अच्छा है, so you can definitely go for youth parliamentary debate. हिंदी इंग्लिश आप मिक्स भी यूज कर सकते हो, उसमें लैंग्वेज का ऐसा कोई बैरियर नहीं होता. Then again, if you are a good Hindi speaker, आपके लिए कन्वेंशनल डिबेट जो कि थर्ड नंबर पे, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. बिकॉज आई हैव सीन क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड ट्रस्ट मी दिस फैक्टर, व्हेन अगर एक टीम, आई हैव बीन इन वेरियस फाइनल्स, तो मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज कि अगर आपके सामने एक अच्छे हिंदी स्पीकर्स की टीम है, लाइक प्रॉपर हिंदी स्पीकर्स, आई हैव सीन पीपल कोटिंग भगवद गीता एंड श्लोक्स फ्रॉम इन संस्कृत, एंड दे आर एबल टू विन द कॉम्पिटिशन.
मिक्स करके बोलो, बट हिंदी बोलना है तो सिर्फ हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलना है तो सिर्फ इंग्लिश बोलो. Right. So these are all the formats of debating competition. If you have any question regarding these formats, just drop a message or raise your hand quickly. So I can otherwise move to the some tricks and tactics you should adopt for excelling in these competition. Any doubts on the formats? Okay, great. Someone by Arnav Goswami just said no, sir. Okay, great, great. So I hope you guys understand about all these formats. Now, quickly just talking about the basic structure of a speech. How should you about in all these formats? Because some there are basic tactics which you as a debater, though they are not as such hard and fast rule कि आपको उन techniques को adopt करना है. उन techniques को I used to adopt मेरे लिए fruitful रही हैं. So you can adopt some of those techniques. Right. So first thing is structurization of your speech. एक स्पीच बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है. आई ट्राई टू कीप इट बाइलिंगुअल बिकॉज आई हैव रिसीव्ड सम मैसेज टू कीप इट अ लिटिल बाइलिंगुअल, राइट. सो स्पीच बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है. द फर्स्ट इज स्टार्टिंग, मिड वन इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्पीच एंड द लास्ट वन इज कंक्लूडिंग. सो व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट? अब जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हो पार्टिसिपेट करने, यू सी इफ देयर आर सम 60 पार्टिसिपेंट्स और आपका पार्टिसिपेंट नंबर है 40, जजेस 30 स्पीचेस सुन के ऑलरेडी दे गेट टायर्ड और वो बोर हो जाते हैं. दैट्स द जेन्युइन फैक्ट, ह्यूमन नेचर है. वो 5 मिनट की स्पीच बार बार सुन सुन के थक जाएंगे. यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग, आप स्पीच को स्टार्ट कैसे करते हो, कम्स इनटू पिक्चर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्टिंग के लिए देयर आर वेरियस टेक्निक्स. आई कैन सजेस्ट यू 3. सो फर्स्टली आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट विद रेजिंग अ हाई टोन क्वेश्चन. ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ अपनी स्पीच को रेज करो, स्टार्ट करो कि स्टार्टिंग से ही आप एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ के फिर अपनी स्पीच को कंटिन्यू कर दो. Second technique is using some joke or some sarcastic comment. When I mean sarcastic, just don't hit below the belt. ठीक है, there are equity policies in tournaments. Your sarcasm should be under the domain and the equity policy of the tournament. Just don't go below the belt, right? So you can use some sarcastic comment or a joke to grab the audience attention. Or the best technique and the most simplest and most adoptable जो कि ज़्यादातर स्पीकर्स यूज करते हैं, किसी फेमस पॉलिटिशियन, फिलोसफर या फिर किसी पर्सनैलिटी का आप कोई कोट से स्टार्ट करो. अगर आप सिंपली जाके आप 41th नंबर पे जा रहे हो और सिंपली अपनी स्पीच स्टार्ट कर दोगे, दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि जजेस आपको एनी हाउ इग्नोर कर देंगे, वो ऑलरेडी टायर्ड होते हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अडॉप्ट सम स्टार्टिंग गुड आइडियाज टू स्टार्ट योर स्पीच. I most of the time used to adopt quotes wala part. I quote many of the famous philosophers, politicians to start during the starting of the speech. ठीक है, तो स्पीच स्टार्ट करो. जोक्स वाला पार्ट आई विल से कि इतना फ्रीक्वेंटली आप लोग अडॉप्ट मत करो, क्योंकि देयर आर टाइम्स जब क्योंकि सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो जाती है. आप जोक के साथ स्टार्ट करो, कोई सार्कास्टिक कमेंट मारो, यू एक्सपेक्ट ऑडियंस टू लाफ, बट एट द सेम टाइम इफ दे डिडंट लाफ, सो वो बैकफायर हो जाता है, एक ब्लैंक सिचुएशन क्रिएट कर देगा. तो आप ऑलरेडी एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाओगे, राइट. सो डोंट गो फॉर दैट जोक्स वाला पार्ट so frequently until if you are so confident, and you can definitely go for. So starting your speech either with the question or with some quotation will definitely work, and ये बहुत ही easy है adopt करने में, you can definitely adopt. Now coming to the middle part of the speech. अब ये आपकी speech का core है, आपने judges की attention grab कर ली. Now the lights on you. What you will do in the middle part? Middle part में what people do, many of them in debating competition write really good points. Like they have some genuine strong points and arguments to support the contention they are proving. But problem क्या होती है when you have some good points and didn't lack structure. Right, I have a really great point, मेरे पास बहुत अच्छा point था, लेकिन मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं था, तो मैंने 10 आर्ग्यूमेंट्स बोले. जो मेरे 3 अच्छे पॉइंट्स थे वो उन 10 पॉइंट्स में कहीं सम अप हो गए, कंपाइल हो गए, अमलगमेट हो गए, तो वो मिस आउट हो गए. जजेस ने उनको अच्छे से सुना नहीं. इस वजह से स्ट्रक्चराइजेशन कम्स इनटू प्ले एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर कम्स इनटू प्ले. ठीक है, जब आप स्पीच देते हो आपको 25 आर्ग्यूमेंट्स नहीं रखने, आपको कम आर्ग्यूमेंट्स रखने, लेकिन टू द पॉइंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रखने, और उनका स्ट्रक्चराइजेशन होना चाहिए. स्पेसिफिक स्ट्रक्चराइजेशन से मेरा मतलब है you can also adopt the technique. I have seen various debaters using this technique. Like, so before moving to the contention, the major points which I want to address are A this, B this, C this, or 1 this, 2 this, or 3 this.
Numbering or saying 1, 2, 3 or ABC, first contention, second contention, third contention, right? Specifying the numbers is also at the same time equally productive, right? Just give me a look at the chats. Yeah, I'm not changing it because I'm just giving some quick tactics, because after this slide we'll quickly move to the moot court competition, right? ठीक है, Joyadit, just talking about some tips and techniques about the excelling in debate competition. As soon as we complete this, we'll move to the moot court competition. Right. So we are on the middle part of the speech. A middle part of the speech is always the, as I said, that is most essential. ठीक है, आपको स्ट्रक्चराइजेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ स्पीच. ठीक है, अब नाउ देयर आर क्वाइट अ डिलेमा कि सर आर्ग्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं, टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया, फॉर्मेट ऐसा था, वी आर इन एट अ पोजीशन जहां पे हमने टॉपिक के बारे में कुछ सुना ही नहीं, हमारे सामने आ गया कि ह्यूमन साइबोर्ग शुड बी रिडंडेंट, दलित फेमिनिज्म, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक आ गए जिन पे हम आर्ग्यूमेंट फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं. वेनेजुला क्राइसिस आ गया, मैंने वेनेजुला के बारे में सुना ही नहीं, तो मैं क्या आर्ग्यूमेंट फ्रेम करूंगा. ऐसे सिचुएशन में क्या करना है जब आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? सिंपली याद रखना आप लोग 4 चीजें, कोई भी टॉपिक हो उसके कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं. कोई भी टॉपिक, वी टॉक अबाउट एनी टॉपिक, गवर्नमेंट ब्रिंगिंग द फॉर्म बिल्स, राइट, उससे पहले सीएए आया, जम्मू कश्मीर का इशू हो गया, इंटरनेशनल वेनेजुला क्राइसिस हो गया. ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसके कुछ इश्यूज होते हैं, इनको ध्यान रखना. सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, मॉरल इफेक्ट और इकोनॉमिकल इफेक्ट. आप इन ग्राउंड्स को कंसिडर करो, इनको एज अ थीम लो. कोई भी टॉपिक ऐसा हो उन पे ये 4 आर्ग्यूमेंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे. एनी हाउ आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं होगा तो ये 4 आर्ग्यूमेंट जरूर रहेंगे. अब इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जल्दी से. टॉकिंग अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये आया, सो इसका कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट आएगा कि सीए आने से व्हाट पॉलिटिकल इंपैक्ट इट हैज बीन क्रिएटेड. पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ कि पॉलिटिशियंस, थोड़ा सा डेमोक्रेसी में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ. ठीक है, पॉलिटिकल ओपिनियंस आना शुरू हो गए, डिबेट्स होना शुरू हो गए, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स पे थ्रेट आ गया. सम सेड दैट the proper law and legislation had not been followed in adopting the CAA. ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आने लगे एंड वी कैन, इस टाइप से आर्गुमेंट हमारा जाएगा कि पॉलिटिकल इंपैक्ट इसने क्रिएट किया बाय डिस्टर्बिंग द वेरी बेसिक ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो इन द प्रेजेंट केस. ठीक है, तो आपके पास एक आर्गुमेंट बन गया, पॉलिटिकल इफेक्ट आपने दिखा दिया. सेकंड, इकोनॉमिक इंपैक्ट, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा इन अ सिचुएशन हम बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं फ्रॉम अदर 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड व्हाट, I forgot the country. So whatever the country is, we are bringing people from these countries. अब जब हम यहाँ से ला रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वी आर नॉट फूड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड इकोनॉमी. ऐसे सिनेरियो में हमारे पास इकोनॉमी का लॉस होगा, करेंसी विल गो डाउन एंड ऑल दीज फैक्टर्स कम्स इन. तो हमने इकोनॉमिक इंपैक्ट दिखा दिया. पॉलिटिकल वी हैव ऑलरेडी शोन. मॉरल इंपैक्ट क्या है कि मॉरली इट इज नॉट करेक्ट, इट्स अनफेयर फॉर द अदर सिटीजंस, इट्स नॉट इक्वली. अच्छा, डोंट स्टार्ट डिबेटिंग और कमेंटिंग अबाउट द पॉलिसी, इट्स नॉट ओपिनियन, आई एम जस्ट गिविंग यू सम random arguments about this, how to frame it, right? So इसका moral impact होगा, कुछ moral impact होगा कि morally ये correct नहीं है, इसके लोगों के लिए गलत है और philosophically गलत है. ठीक है, philosophical argument. Political हो गया, moral हो गया. now social impact. social impact क्या है कि आप stakeholders को दिखाओ. when this comes into picture, who are the stakeholders? society at large पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? एक feeling of intolerance आ रहा है, myth create हो रहा है, fake news चल रही है, एक्चुअली में क्या पॉलिसी, उसके अलावा बहुत सारी सम रैंडम पॉलिसीज कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है, तो आपके पास जब भी यू हैव नो आर्गुमेंट ऑन एनी टॉपिक, इन 4 फैक्टर्स को कंसीडर करना, पॉलिटिकल इफेक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट एंड पॉलिटिकल इफेक्ट. इन 4 को थीम बना के आप एटलीस्ट 4 आर्गुमेंट्स बना सकते हो एनी डे ऑन एनी टॉपिक. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो फिलोसफिकल नहीं है. ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट डिबेटिंग. एंड बिफोर एंडिंग दिस स्पीच, never end your speech with the question mark. That is, I have seen quite a lot of time people, because who will answer that question? आप किसके लिए वो क्वेश्चन छोड़ रहे हो? जजेस के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए, किसके लिए छोड़ रहे हो? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी स्पीच में सारे क्वेश्चन का आंसर दे के जाना है. आप अगर अपनी स्पीच, लीविंग अ क्वेश्चन इज नॉट लाइक अ, पीपल थिंक दैट एक डिलेमा में छोड़ते हैं, बट वो डिलेमा बैकफायर कर जाता है क्योंकि आप अपनी स्पीच को एक इनकम्प्लीट वे में छोड़ के जा रहे हो, राइट? And that is where the conclusion go wrong, and that's not fair for a debating speech. So इन 3 पार्ट्स का ध्यान रखना है. स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई हैं,
मिड पार्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए अच्छे, हाउ टू फ्रेम आर्ग्यूमेंट ऑन अ ब्लैंक टॉपिक, उन चीजों का ध्यान रखना, एंड इन कंक्लूडिंग विल टेक केयर ऑफ फ्यू मोर थिंग्स, राइट? सो अंटिल हियर इट्स कम, is it fine, and do you guys have any doubts, or else we can move just quickly to the moot court competition, which is the most important part for today's webinar. Right, you can just simply drop the messages in the chat box. Any doubt until now on debating and the formats of debating? If you want to speak, you can also just raise your hand. Okay. So I have received a question, how to participate in these formats, right? So there are a lot of organizations who are just mentioning about these formats. There are a lot of these tournaments, APD, BPD, conventional, turncoat. They keep you updated about these competition. Few I can recall are Logtopus, Noticeboard, Kacheri.in. Right. These are the organization we can look after, and they'll keep us updated about these competitions. Right. So you can just simply keep yourself updated about these debating competition from these organizations. Every month there are some 5 to 6 competition held about these debating. Right. So you can participate simply in this. And I strongly suggest कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, do participate in the international debating tournaments like Australs होता है, WDC होता है, वर्ल्ड डिबेटिंग फेडरेशन नेपाल एशियन सर्किट में होता है. इन डिबेट्स की नॉलेज भी आपको फेसबुक के ग्रुप्स, आप सिंपली सर्च करोगे इंटरनेशनल डिबेटिंग टूर्नामेंट्स, अगर कोई डिबेट नियर बाई होगा तो आपको वो शो कर जाएगा, पॉपअप हो जाएगा. राइट. अब बोल रहा हूँ लॉकडाउन में कर लो, क्योंकि एज सून लॉकडाउन एंड इन डिबेट्स का पार्टिसिपेशन कॉस्ट, इफ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, 80,000 से 1 लाख पार्टिसिपेशन प्राइजेस का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रहने का, जब आप वहां जाओगे तो रुकोगे, स्टे भी करोगे, सिर्फ पार्टिसिपेट करने में आपका 80,000 लग जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है. एक डिबेट में आप सिर्फ सीखने के लिए 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए दे दो तो प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, अभी ऑनलाइन फॉर्मेट चल रहे हैं. द सेम टूर्नामेंट जो 80,000 आपको कॉस्ट करेगा, इस वक्त ये इंटरनेशनल डिबेटिंग टूर्नामेंट्स, ऑस्ट्रल्स, यूएडीसी, डब्ल्यूडीसी, डब्ल्यूडीएफ, ये सारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं एट वेरी रीजनेबल 2,000 1,000 ऐसे हो रहे हैं. सो ये आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है इंटरनेशनली एक्सप्लोर करने का, इन जब तक है, एटलीस्ट जब तक डिबेट्स ऑनलाइन चल रहे हैं. ठीक है, दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट ह्यूजली टू योर सीरीज व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. ठीक है, कंसीडरिंग और कोई डाउट्स हैं डिबेटिंग पे? Yeah, Himani, not an issue. You can just simply find about these tournament by simply, when it comes to international debating tournament, there are a lot of Facebook groups like Indian Parliamentary Debate Calendar. ठीक है, आप उसको ज्वाइन करो. इंडियन पार्लियामेंट्री डिबेट, ऑल दोज डिबेटिंग टूर्नामेंट जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, आपको अपडेट्स वहां से मिलते रहेंगे. ठीक है, देन दीज ऑर्गेनाइजेशन आई नेम्ड वेरी, कौन से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं डिबेट के, डिबेटिंग स्पीच. ओके, या सो नेवर रेज. So am I audible now? Monita, if you can just clarify, am I audible? Yeah, you're audible. Okay, great. So yeah, what was the question? How to end your speech? Yeah, ending a speech is like you can never just never end your speech by raising a question. What's the best way to just put up a concluding remark in such a way? Let's say if we talk about the freedom of media, which was my topic theme of the strongly propose this motion and restructure all the arguments. Yeah, participating in international debate competition at initial stage. Yeah, you can definitely go. I'll strongly suggest, because anyhow, when you go for national, don't look international tournament with a view that कि वो international level पे होते हैं, they will be much more difficult. Right? Difficulty will be little more higher, but
think for the perspective that you will get an exploring, you will get a chance to see international debates. Circuits में a lot of debaters will participate in those tournaments. So आप ऐसे का debate में participate करते हो international tournaments में, you will observe a lot of things in these tournaments, and that is the really good point. You will learn really good techniques, really good Hello. You're audible. Yeah, so sorry, there was slight network issue. Yeah, just give me a second, I'll reshare the screen. Hello. Is it visible now? Yeah, it's visible. Great. Just can you confirm which slide it's visible on the screen? Is it about the mode code competition? Yeah, it's about mood court competition. Right. So yeah, guys, we'll just quickly move to the mood code competition. Okay. So yeah, I put up a small quote about the mood code competition, that a mood code competition is a Fox theater of war that trains you for real life cut and thrust of code. अगर इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में फ्रेम करें, सो मूड कोड कॉम्पिटिशन्स मॉक ट्रायल होते हैं आपके, जो आप रियल कोर्ट में करते हो, नॉट बिल्कुल रेसिप्रोकल या डुप्ला लैंगर होते हैं, बट major life in moot court competition in the actual court, right? So moot court competition holds the biggest priority when it comes to extracurricular activities. आप लॉ स्कूल में कोई भी एक्टिविटी को बात करो, वेदर आप मीडिएशन कंपटीशन की बात करो, डिबेट्स की बात करो, moot court competition holds the biggest priority, right? Just give me a second, I'll open the chat. Right, so moot court competition are the most essential and, in my opinion, biggest activity when it comes to extracurricular for a law student, because practically it will give a lot of exposure. You will get a chance to speak in front of various reputed judges. I remember in the Manfred Latches International Moot Court competition, the former president of International Court of Justice comes for judging that particular competition. So pleading in front of such dignitary is in itself is a big thing, right? So yeah, coming to quickly moving to the next part.
Diksha, is the screen visible now? Yeah, it's visible, but it is the same moot court competition. Okay, great. Uh, Now is it changed? Yeah. It's how to select a moot. Okay. So when it comes to moot court competition, the first question is how to select a moot court competition. Right. Now this is the first question when you select a moot comes into your mind. When you go for a moot court competition, always look for the organization. Right. These days a lot of organizations and institute are organizing moot court competition. So it becomes a difficult for a participant to select at which moot court competition he should actually go ahead and participate in. Right. Just give me a second. Okay, so always go for the moot court competitions which are reputed, right? Because the chances of being biased will be very less. Moot court are for sure, some of the moot courts are biased, but yeah, those things are common in various, even in debate competitions as well. Right. So moot court competition, when it comes to mooting, always look who is organizing that moot court competition. If an organization is organizing, just always look that whether it's in registered or not. If an institute is organizing, look for the addition, which is the second point, addition of the moot. Always go, if you have a chance of participating, always go for a moot court competition जिसका addition बढ़ा हो. Third in number, fourth edition, fifth edition, 12, 20th, इस टाइप के जो फर्स्ट एडिशंस होते हैं, सेकंड एडिशन, अगर आपके पास चांस है, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड दोज एडिशंस, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू वांट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन, right? So now when it comes to the topic of the moot, pay attention to the topic. ठीक है. Now when you go for the moot court competitions are on various domains of the law. It's on competition law, it's on environment law, it's on taxation, international commercial arbitration, or just name a law, there is a moot court competition. Right. Now it comes to your area of interest. Select a moot which is of your area of interest, where you actually want to practice. In the initial years, you can just explore. You can just quite go for any moot court competition, irrespective of the topics. But as soon as you have, if you have a slight interest, for example, I have a good interest in international law, so let's definitely go for TILA moot, Jessup's, and Nelson Mandela, and all the other big international moot court competitions. So go for the topic specific. This thing you realize when you actually participate in the mood where you want to research. If you go for मैनफ्रेड लैचेस, अगर आप में से किसी को इंटरनेशनल स्पेस लॉ पे इंटरेस्टेड है, ठीक है, एंड यू गो फॉर मैनफ्रेड लैचेस मूड, सो आपको रिसर्च करने में यू विल गेट अ स्लाइट इंटरेस्ट, एक डेवलप इंटरेस्ट होगा जो कि आपकी रिसर्च को थोड़ा इजी बनाएगा. अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस लॉ पे करना है, देन इट विल बी रियली बेनिफिशियल, आपके मूड में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. अगेन एट द सेम टाइम, अगर आपको इंटरेस्ट है इंटरनेशनल लॉ पे, आई विल गिव यू अ मूड ऑफ क्रिमिनल लॉ, सो इट विल मेक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होगा, देन इट विल बी रियली प्रॉब्लमैटिक फॉर यू टू परफॉर्म गुड इन दैट मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन. Now the biggest 2 points which I personally feel are the last 2 points: calculate the number of days for the days left for the final submission and take a look at your calendar. When it comes to calculating the number of days left for the final submission, guys, do remember, don't take a moot just for the sake of doing it. If there are 7 days, 10 days or 15 days left, always look when the moot propose. जब भी आप moot में participate करते हो, ये देखो सबसे पहले कि moot proposition कब रिलीज हुआ है, moot problem रिलीज कब हुआ है, राइट? अगर moot problem रिलीज हुआ है लाइक 14th को और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं 30 को, देन आपके पास ऑलरेडी 16 डेज का गैप होगा जो अदर टीम के पास एडवांटेज है. सो नेवर पार्टिसिपेट इन अ मूट इन अ हरी. आप सबसे पहले देखो कि मूट प्रपोजिशन रिलीज कब हुआ है. आप बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो पार्टिसिपेट करने के लिए. इफ यू फील दैट हाँ अभी 2 ही 3 दिन डिले हुआ है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है. So number of days is really important, and take a look at your calendar, because once you go for a moot, it requires a simultaneous dedication for a month or the number of days you are participating, right? In case your exams are falling, you have planned internships, other works, planned a research paper. Take a note that once you participate in a moot, all other things will be ignored anyhow, because you cannot work simultaneously on a moot and any other activity. Moot require a really sincere dedication if you want to perform well. moot के लिए आपको सिर्फ अगले 1 महीने या 1.5 महीने जब तक आपका moot आता है, तब तक आपको उसी पे ध्यान देना होगा पूरी तरीके से. ठीक है.
Now this part is most important to for addressing myths of the mood court competition. ठीक है, अब myths के बहुत सारी myths हैं which I observe or I have also listened from my juniors. They are repeatedly saying mooting is only for those who want to practice litigation. That is not at all true. आप चाहे लॉ फॉर्म में काम करना चाहते हो, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर, इन हाउस काउंसिल, whether you want to work in a bank as a legal advisor, mooting is always, क्योंकि mooting का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ जाके बोल रहे हो और रिसर्च करो. रिमेंबर वन थिंग, mooting में 3 चीजें इन्वॉल्व रहती हैं और लॉ के लिए वो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. इसी वजह से एक्स्ट्रा करिकुलर में mooting को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है. द फर्स्ट थिंग इज, आप मूट जब स्टार्ट करते हो तो आप रिसर्च करते हो, और रिसर्च इतना इंटेंस और डीप होता है. आप कोई भी टॉपिक पे जब मूव करते हो, आप केस लॉज ढूंढते हो, लेजिस्लेशन ढूंढते हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज ढूंढते हो, डॉक्ट्रिन्स. यू डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न. तो जिस भी टॉपिक पे मूड होता है आपका, जब तक मूड खत्म होता है आपका वो टॉपिक शॉर्टेड है. यू कैन नॉट लर्न अ टॉपिक बेटर देन बाय मूटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, अब द सेकेंड फेज आता है उसका ड्राफ्टिंग का. आपको रिसर्च को पूरा कंपाइल करके एक मेमोरियल बनाना होता है जिसमें आप फॉर्मेटिंग करते हो, साइटेशंस डालते हो, प्रॉपर एडिशंस जो भी चल रहे होते हैं साइटेशन के लेटेस्ट आप वो फॉलो करते हो. ठीक है, सो इसमें आपका ड्राफ्टिंग का वर्क हो जाता है और वो भी काफी इंटेंस और प्रॉपर होता है क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे होता है. गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो तो ड्राफ्टिंग आपकी इंप्रूव होती है. एंड लास्ट स्टेज आप जब प्लीडिंग पे आते हो, देन इट इज इंप्रूव्स योर स्पीकिंग. आप कैसे अपने आर्गुमेंट को स्ट्रक्चराइज करके जो आपने मेमोरियल्स में लिखे हैं उनको जजेस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो. I'll just quickly wrap up it up, then I'll take the questions in the last, okay, for the voting wala part. Right, so how you present those arguments in front of judges like International Court of Justice के अगर जज आपके सामने बैठे हैं, Supreme Court के, I still remember in Surana and Surana when I was the participant, we have pleaded in front of the Bar Council of India के former president. ठीक है, so it become a really complicated. There is a nervousness कि आप इतने highly dignified person के आगे आप plead करते हो, तो it will give you a sense of real moot or let's say real court, right? So mooting involve all those things which are researching, drafting as well as speaking. So इसके बाहर का डोमेन एक लॉ स्टूडेंट या फिर लॉयर के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट दीज आर दी कोर थिंग जो आपके स्ट्रांग होनी चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट. इस वजह से mooting काफी इंपॉर्टेंट है आपके लॉ करियर में. ठीक है, mooting is mere a competition and will not help in your career, as I already told you कि करियर में of course mooting is important. आप कोई भी पीपीओ आप यू कैन लुक फॉर योर सुपर सीनियर्स इन योर कॉलेज, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस. आपके कॉलेजेस में जिस भी सीनियर ने बड़ी इंटर्नशिप्स क्रैक करी होंगी, आई कैन blindly say this, just have a look on their CVs. They will definitely have some good number of moot court competition. Good, by good number I say reputed. They must have done quite a good in moot court competition in when it comes to extracurricular activity, right? And the biggest myth, which is first year cannot participate in mooting. Of course first year can participate in mooting. There is no as such barrier. If anyone is restricting you or telling you that being a first year आपको moot court नहीं करना चाहिए, just don't listen to him and go for it. Moot court is for any year of students. I have seen first year students winning reputed moots, right? Surana and Surana International Attorneys and various other tournaments. I have seen first year students doing really, really well in these moots. Okay, so there is no as such compilation or compulsion that first year cannot participate in these moots. Right. So Diksha, is the screen visible now? It's the same. How to read? How? हाँ नहीं आ गया. Myths of moot court competition. Okay, now myths I forward. How to read a moot problem? Yeah, Okay. yeah. It has done. Now you have selected. Now you have reached a phase. आप लोगों ने moot उठा लिया है, ठीक है? You have selected a moot, ठीक है? अब यहाँ से आपका first step start होता है. How to read a moot problem? The first point is read as much as it you possible. The rule which I follow is 5 times reading rule. जब भी आपके सामने मूड प्रॉब्लम आता है, यूजुअली इन बिग टूर्नामेंट्स आपको जो मूड प्रॉब्लम मिलेगा उसकी लेंथ होती है नॉर्मली 35 to 50 पेजेस के अराउंड. जैसे कि एफडीआई का जो मूड होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जेसएप्स के जो मूड होते हैं, ठीक है, इसमें आपकी जो वर्ड लिमिट मूड की जो मूड प्रॉब्लम होती है वो 45, 50, 35 पेजेस की होती है, ठीक है. और जो नेशनल लेवल बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं उनकी जो नॉर्मल लेंथ होती है वो वेरी करती है 2 पेजेस से लेके 25 to 30 पेजेस तक. अलग अलग टूर्नामेंट्स की मूड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. अब इन मूड प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आपको एक रफ रीडिंग लेनी है एज सून एज यू जॉइन द मूड, ठीक है. आपने पार्टिसिपेट किया, गिव इट अ क्विक रीड. आपको पूरा थीम समझ में आना चाहिए, मूड का थीम एक्चुअली था क्या.
सेकेंड रीड में आप एक्चुअली थोड़े थोड़े से नुएंसेस फिर से पढ़ोगे तो आपको नुएंसेस कवर होंगे कि अच्छा ये चीजें कीवर्ड्स थे इसमें। थर्ड रीड में स्टार्ट ड्राइंग आउट एंड कनेक्टिंग द आर्गुमेंट्स की एक्चुअली में कौन कौन से लॉज इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्विक रीड में। फोर्थ टाइम में आप उसको लिखना शुरू कर दो। एंड फाइनली फिफ्थ टाइम में आपके पास जब रीड करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि एक नई मूड प्रॉब्लम फ्रेम हो गई जो कि पूरी कंप्लीटली शॉर्टेड हुई। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मूड को 5 बार पढ़ो। व्हाट आई पर्सनली फॉलो जब मैं मूड्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, सो यूजुअली व्हाट आई डू every time before I sit on framing, drafting or pleading practice, I'll read a mood problem. For example, if अगर 45 days हैं for preparation for the mood, I'll read minimum 45 times the mood problem. And trust me, when you observe this, जब आप participate करोगे, each time आप mood problem पढ़ोगे, you'll observe some new thing. And that's the most tricky part of mood code competitions. Everything is hidden in the mood problem itself. The second part is material and immaterial facts. सारे ही मूड स्कोर कंपटीशन में आप ऑब्जर्व करोगे कि फैक्ट्स आर अ लिटिल ट्विस्टेड। 35 पेज की मूड प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट एसेंशियल कि आपके 35 पेजेस इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंट पेजेस विल बी 7 और 8 ओनली। अब आपका वर्क यहाँ पे कि आप आइडेंटिफाई की करो कि कौन सा मटेरियल है और कौन सा इमटेरियल है। बाय मटेरियल फैक्ट्स आई मींस इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमटेरियल फैक्ट्स सिर्फ बैकग्राउंड देने के लिए, ठीक है, एक बैकग्राउंड स्टोरी की एक्चुअली में मूड प्रॉब्लम में हुआ गया, पर्सन एक्स इज लिविंग देयर, ही हैज अ बिजनेस देयर, सो वो सब चीजें इररिलेवेंट है। एट द सेम टाइम अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि कुछ चीजें मूड प्रॉब्लम में ट्रिकी सी होती हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, दे आर जस्ट केप्ट फॉर अ रीजन, बिकॉज दे आर जस्ट केप्ट फॉर अ रीजन टू कंफ्यूज यू, ठीक है। दे आर काइंड ऑफ अ रैट ट्रैप, just don't fall in that, because once you fall in that you will wait quite a good amount of time. इसीलिए अगले पॉइंट्स आप नजर देखना, इस चीज को, ये रैट ट्रैप में फॉल करने के लिए आपको मटेरियल और इमटेरियल फैक्ट आप जब मूड प्रॉब्लम पढ़ोगे डिस्टिंग्विश कर लो और सेपरेट कर लो कि कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ आपने मूड प्रॉब्लम पढ़ लिया, द नेक्स्ट स्टेप कम प्रिपेयरिंग टाइमलाइन। अगर आपके मूड प्रॉब्लम में लेट्स से एफडीआई और जैसा जैसे मूड में आपको बहुत सारे डेट्स और डेज मिलते हैं कि ऑन 5 जनवरी को उसका अरेस्ट हुआ, देन 6 जनवरी को ये हुआ, देन 7 को ये हुआ, इन रिपीटेड डेट्स को आपको क्या करना है, टाइमलाइन बनाना है सिंपल सा। सिर्फ उसमें डेट्स रहेंगी और उन डेट्स को क्या इवेंट हुआ है और उनको आप हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि उनको थ्रू आउट योर मूड प्रिपरेशन दे विल हेल्प, दे विल शॉर्ट अ लॉट ऑफ थिंग। जब आप इन एक्टिविटीज को करोगे यू विल ऑब्जर्व कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड से कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं आपके लिए। टाइमलाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको इग्नोर मत करना। टाइमलाइन, डू फ्रेम अ टाइमलाइन एज सून एज यू कंप्लीट रीडिंग योर मूड प्रॉब्लम। नाउ आइडेंटिफाइज द इश्यूज। कई बार मेजॉरिटी ऑफ मूड कोड कंपटीशन में वो इश्यूज लिख के दे देते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो नहीं भी देते हैं, ठीक है। सो अब हमारा काम, अगर उन्होंने दे दिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो हम इश्यूज पहले फॉर्म करेंगे, क्योंकि वी कांट गो अहेड एंड रिसर्चिंग। रिसर्च करना क्या है हम लोगों को, रैंडम जगह पे तो करेंगे नहीं। वी नीड टू फिगर आउट कि हमारे इश्यूज क्या हैं, राइट। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज इश्यूज in order to start preparation for our mood code competition, right? अब आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, ये आपका पहले पॉइंट से ही लिंक्ड है कि जब आप मूड प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, मटेरियल इमटेरियल फैक्ट्स देख रहे हो, उसी में आपको कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड से मेरा मतलब कुछ वर्ड्स को जरा ध्यान से पढ़िएगा, जैसे कि विल, शैल, ठीक है। इन वर्ड्स में बहुत सारी चीजें हिडन रहती हैं कि एज पर, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन स्टेटमेंट एज पर दिस पर्टिकुलर एनजीओ अ पिटीशन वाज फाइल्ड, एज पर एनजीओ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर नॉट गुड, ये एक ओपिनियन है, दीज आर स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट्स ये कीवर्ड्स होते हैं, ये जो ग्रामेटिकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं मूड प्रपोजिशन में, दीज आर द कीवर्ड्स। और यहीं पे कहीं ना कहीं वो रैट ट्रैप सेटअप होता है, पीपल मिसगाइड और इसको ऐसे रैंडमली यूज करते हैं और वेगली रीड करते हैं, एंड दैट इज वेयर थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हो जाता है उनके लिए, अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। नाउ ज्यूरिसडिक्शन, जब आप मूड प्रॉब्लम खत्म करते हो द फर्स्ट थिंग व्हिच इट कम्स टू इन योर माइंड शुड बी द ज्यूरिसडिक्शन। कोई भी मूड हो, नेशनल, इंटरनेशनल, jurisdiction is the first issue you will always come up with, right? Jurisdiction, for example, agar I'm participating in a mood court competition, so the first thing I'll do is just look after the ki jurisdiction kya hai. If PIL, if mood court competition is on a PIL, public interest litigation, so the first issue will be the jurisdiction where it lie. Several times it is mentioned in the moot court competition that the matter is presented before the High Court or Supreme Court. A lot of time it is not presented. ठीक है, when you are not sure कि whether it is in High Court or Supreme Court,
just frame the issue. ठीक है, you need to prove that whether it is under Article 226 of High Court or Article 32 of Supreme Court or various other provisions. So you always identify the jurisdiction, which will be the first step for after you have done with the moot problem, right? With this come to the, yeah, this one is the most important. If you are a fresher, right, since I have in the starting only, that's why I asked that how many of you are freshers. Only few of you have done the moots priorly, right? So these are the essentials which you should keep in mind. This will confuse a lot if you are a fresher, right? These are the terminologies. Like moot court competition, unlike debates are very rough in nature. There is no as such proper structure जहाँ पे आप जाके randomly कुछ भी बोल देते हो. मूट कोर्ट में एक proper decency और terminologies होती हैं. इन words को आपको use करना ही होता है, ठीक है. इनके भी marks होते हैं. मूट कोर्ट मैनरिज्म बोलते हैं इनको, ठीक है. ड्रेसअप प्रॉपर करना, लाइक अ लॉ स्टूडेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. इनकी भी प्रॉपर मार्किंग स्कीम होती है. व्हेन यू सी दी मूट कोर्ट का मार्क्स वाला पार्ट, यू विल ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स. So पहली terminology which will be beneficial for all the freshers who are here, the counsel pleads ignorance. Now when you participate in a moot court competition, judge ने कोई question पूछा आपसे and you are not sure and you are not able to answer that particular question. So what you have to say is just the counsel pleads ignorance, right? Instead of just twisting the answer, if you don't know the answer, simply just frame it and say the counsel pleads ignorance and just move ahead of it. If you continuously keep on twisting the question, it will only irritate the judge, right? Never answer so badly, or let's say if judge is not agreeing, just don't force to convince him. Okay, if you have said your answer, judge convince नहीं हुआ, उसने वापस से क्रॉस क्वेश्चन किया. If judge cross questioning, you try to answer, और अगर वो फिर से क्रॉस क्वेश्चन करे, then try to understand you are going on a wrong track and just plead ignorance and move to your further arguments and submissions. ठीक है. Now lordship and excellencies, ये दो अलग अलग टर्म होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. आप जब मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो, जो जजेस बैठे हैं उनको हम बोलते क्या है? When it come to national moot court competition, हम उनको लॉर्डशिप बोलते हैं. लॉर्डशिप और लेडीशिप, ठीक है. अगर वहाँ पे मेल जज है तो हम लॉर्डशिप बोलते हैं, अगर फीमेल जज है तो लेडीशिप बोलते हैं. अब अगर ये सिनेरियो हो गया कि आपके पास लेडी भी बैठी हैं और लॉर्डशिप भी, मतलब मेल जज भी और फीमेल जज भी, देन क्या बोल रहे हैं? तो आप सिंपली बोलोगे द काउंसिल सीक्स परमिशन टू एड्रेस द बेंच कलेक्टिवली एज योर लॉर्डशिप और योर लेडीशिप्स. आप उनसे परमिशन लोगे कि हम आपको ये लॉर्ड पूरी बेंच को कलेक्टिवली योर लॉर्डशिप बोल दें या फिर योर लेडीशिप, वॉट एवर यू प्रेफर, ठीक है. अगर दो मेल जज हैं तो आप योर लॉर्डशिप बोल दो कलेक्टिवली उनको. दो फीमेल जज हैं तो आप योर लेडीशिप बोल दो, और एक मेल और एक फीमेल है तो आप या तो लॉर्डशिप बोल दो या लेडीशिप, कोई इशू नहीं. बट आप उनसे परमिशन लोगे. द काउंसिल सीक परमिशन टू कलेक्टिवली एड्रेस द बेंच एज योर लॉर्डशिप और योर लेडीशिप, राइट. नाउ व्हेन इट कम्स टू एक्सीलेंसीज, नेशनल मूड्स में हम लॉर्डशिप बोलते हैं. व्हेन इट कम टू इंटरनेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन, वी से एक्सीलेंसी, ठीक है. राइट, देयर आर सम क्वेश्चन आई गेस. I'm unable to see the chat. I'll just address all the question in the last. Okay. Yeah. So when it comes to international moot court competition, we say your excellency, right? Because in international moot court competition, we usually see matter is in international court of justice or international criminal court. Okay. In that particular scenario, we address the judge as your excellency. If there are lot more than one judge, your excellencies. Okay. So that is the scenario which will adopt in international moot court competition. Or if there are a lot of, like in the finals, if you see that there are odd number like 7 judges, the person who is the most senior and sitting in the middle part, you can address him directly by saying Mr. President, right? In international court of justice and international moot court competition, the most senior most judge is called Mr. President or Madam President, right? And all the remaining judge will be called as fellow judges or fellow your excellencies. Right. The same thing goes for counsel and agent. When it comes to national moot court competition, you will be the counsel. The participant will be the counsel. The counsel seek permission, the counsel plead ignorance, and all these short of statements. And again, when it comes to international moot court competition, there will be no counsel. It will be about agent, and that is specifically written, if I'm not wrong, in Article 38 of Statute of ICJ. That if a party is representing in front of an international court of justice, he is termed as agent. ठीक है. आप एजेंट ए ऑफ इंडिया, अगर आप कुलभूषण जाधव का केस पढ़ोगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो आप जहां पे भी उस केस में पढ़ोगे, द पार्टीज रिप्रेजेंटिंग आर द एजेंट्स, ठीक है.
Now if judge have answered you, asked you a question and you have answered it, ठीक है, after that what you need to address is indeed your lordship or excellencies. Lordship in case of national and excellency in case of international moot. Every time you have completed your sentences or just judge has asked you a question and you satisfied him, you can just simply ask him indeed your lordship or your ladyship. Okay. Indeed is the most common word. You will use this term throughout your speech some 7 to 8 number of time when you are pleading for moot court competition. ठीक है, till now I think the council plead ignorance, lordship, excellency, how to address the bench. जो person plead कर रहा है वो national और international में क्या होता है, ठीक है, indeed वाला terminology, these are terminologies are clear. Now coming to the compendium part and moot compromise. Compendium क्या होता है moot court competition में? Compendium is a compilation जो आप अपने पास रखे हो, अपना टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स को देते हो ना जजेस को देते हो. जब आप अपना मोट कोर्ट में मेमोरियल सबमिट करते हो देन आप एक कंपेंडियम भी साइड वाइज प्रिपेयर करते हो जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होंगी, राइट. आप कोट कर रहे हो कि सर इन योर लॉर्डशिप इन आर्टिकल 21 द काउंसिल प्लीड्स दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट लायबल. जज ने अगर आपसे पूछ दिया कि काउंसिल कैन यू रीड आर्टिकल 21 एज इट इज, आर्टिकल 21 तो आपको याद नहीं है पूरा, इसके लिए आप कंपेंडियम रेफर करते हो तो आप बोलोगे योर लॉर्डशिप काउंसिल सीक परमिशन ऑनलाइन मोड्स में. ऑफलाइन मोड में आप कंपेंडियम साथ में लेके रखते हो तो आप कंपेंडियम में पढ़ के रीड करके बोल देते हो. सो कंपेंडियम में आप हर वो चीज डालोगे, केस के फैक्ट्स होंगे. कई बार जब कोई केस कोट करते हो जज पूछ देता है कि हमको इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स बताओ, ठीक है, उस केस में आप केस के ब्रीफ स्मॉल फैक्ट्स, ठीक है, ऑल अदर जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब कंपेंडियम में मेंशन करोगे तो इन केस जजेस अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस सिनेरियो के लिए आप प्रिपेयर रहो, राइट. Then the question come about the moot compromise. अब इससे confuse मत होना. I see a lot of freshers confusing moot compromise, moot proposition and fact sheet. ये similar words हैं. moot problem को ही moot compromise बोलते हैं, moot proposition बोलते हैं, या तो आप fact sheet बोल दो. अपनी speech में भी जब आप oral pleadings में जाओगे इनमें से आप कोई भी term quote कर सकते हो, right? Just a second. Yeah, all right. Now coming to the last part of moot court terminology which is rebuttals and sur-rebuttals. Rebuttals क्या होते हैं? देखो moot court competition are like real courts, so इसमें एक party will be the respondent and other will be the applicant side, right? So applicant side या फिर petitioner side जब अपनी rebuttals को देते हैं, अगर आप applicant side या petitioner side से जो rebuttals देते हो उनको हम सिर्फ rebuttals ही बोलते हैं, लेकिन जब respondent की rebuttals देते हैं उनको बोलते हैं sur-rebuttals, राइट. सो बस इसमें इतना ही सही डिफरेंस है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज और नहीं होती है मूट कोर्ट में. इन टर्मिनोलॉजीज का आप ध्यान रखो व्हेनेवर यू पार्टिसिपेट इन अ मूट कोर्ट कंपटीशन बिकॉज दीज ऑल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ मूट कोर्ट मैनरिज्म, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज कि आप जज को कैसे एड्रेस कर रहे हो, राइट. सो इन चीजों का भी इंपॉर्टेंस होता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपने मूट प्रॉब्लम पढ़ लिया, रिसर्च आपने स्टार्ट कर दी. नाउ कमिंग हाउ टू ड्राफ्ट अ मूट कोर्ट कंपटीशन, राइट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाउ टू ड्राफ्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्टिंग when you have done with your research, break up the issues. never go for example अगर आपने अपना मूट कोर्ट प्रॉब्लम पढ़ लिया पूरा, you frame that कि 3 इश्यूज बन रहे हैं मेरे, राइट. फॉर एग्जांपल आई हैव अ मूट कोर्ट कंपटीशन ऑन PIL. मैंने 3 इश्यूज बनाए. पहला इशू मेरा हो गया वेदर PIL is maintainable, jurisdiction का हो गया इशू. सेकंड मैंने बता दिया कि whether fundamental rights has been violated. और थर्ड मैंने बना दिया कुछ भी like OTT platforms fall under the ambit of intermediaries. तो अब आपको क्या करना है, ये रिसर्च पेपर तो है नहीं कि आपने हेडिंग्स बनाए उनके नीचे सारा कंटेंट डाल दिया. ऑलवेज ब्रेक अप द इश्यूज. अब मैंने जब बनाया कि whether the PIL is maintainable तो मैं सिर्फ इस पे नीचे कंटेंट नहीं ऐड करना है. आई नीड टू क्रिएट सब इश्यूज. रिमेंबर ऑलवेज क्रिएट सब इश्यूज. सब इश्यूज के एब्सेंस में आप कभी भी बेस्ट मेमोरियल नहीं जीत सकते मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में. यू ऑलवेज नीड टू फ्रेम सब इश्यूज. सब इश्यूज कैसे रहते हैं? सब इश्यूज विल बी फॉर एग्जांपल लेट्स से द PIL वाला इशू, वेदर द PIL इज मेंटेनेबल बिफोर द कोर्ट. इसके सब इश्यूज क्या हो सकते हैं कि सबसे पहला इशू हो सकता है वेदर इन द प्रेजेंट केस देयर इज अ लोकस स्टैंडी. सेकेंड सब इशू हो सकता है देयर इज नो अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल. थर्ड सब इशू हो सकता है ऑल द नेसेसरी प्री रिक्विजिट्स फॉर फाइलिंग अ PIL इज बीइंग फुलफिल्ड. इस टाइप से आप सब इश्यूज बनाते हो और अपने इश्यूज को ब्रेक करते हो.
प्रिंसिपल इशू को 3 या 4 सब इश्यूज में ब्रेक कर सकते हैं. फॉर मोर अट्रैक्टिव और चीज अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो सब इश्यूज को भी हम सब इश्यूज में ब्रेक करते हैं. ठीक है, सो इनसे चीजें मोर बेटर और क्लासिफाइड और स्ट्रक्चर्ड लगती हैं. और यही सब चीजें छोटी छोटी नुएंसेस हैं जो आपको बेस्ट मेमोरियल जीतने में हेल्प करते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट इज कम, जो अगर पहली बार मूड को ड्राफ्ट कर रहे हैं मेमोरियल, उनको क्या फॉलो करना है. उनको सिंपल से ये रूल दिमाग में डाल लो, रट लो इसको, IRAC. ठीक है, नाउ यू आर फ्रेमिंग एन इशू. आप फर्स्ट टाइम ड्राफ्टिंग कर रहे हो, आपने अभी से पहले कोई मूड कोड की ड्राफ्टिंग नहीं की है. IRAC को आपको फॉलो करना है. IRAC में क्या होता है, नाउ यू हैव एन इशू, पर्टिकुलर इशू इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, आप ड्राफ्टिंग शुरू करो, आपको दिमाग में क्या है कि वेदर टू फाइल अ पिटीशन, राइट. तो आपका ये इशू हो गया. रूल्स में आपको क्या करना है, एक एनीथिंग इन दिस लीगल वर्ड या फिर मूड कोड प्रॉब्लम में यू कैन जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग यूजिंग 2 थिंग्स ओनली. पहला, आप कोई लॉ को यूज करके, कोई एक्ट को यूज करके जस्टिफाई कर सकते हो कि आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि थेफ्ट इज अ क्राइम बिकॉज इट इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो जस्टिफाई हो जाएगा. ठीक है, द सेकेंड वे इज टू जस्टिफाइंग अ थिंग इज बाय कोटिंग केस लॉज. ठीक है, और थर्ड थिंग इज बाय कोटिंग ट्रीटीज एंड डॉक्ट्रिन्स. इनके अलावा कोई चौथा फैक्टर नहीं जिनसे आप चीजों को प्रूव कर सकते हो. सो आपके ऊपर है कि आपको अगर कोई भी चीज मूड में, आप इफ यू कोट एनीथिंग, एनी इशू में आपको ये 3 चीजें बैकअप डालनी है. आप ब्लाइंडली फिलोसफिकल स्टेटमेंट नहीं डाल सकते हो. रिमेंबर, आपको कोई भी कंटेंशन प्रूव करना है, सो आपको ये 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे. द फर्स्ट इज कि आपको कोई लीगल बैकिंग डालनी पड़ेगी, कोई एक्ट, लॉ, लेजिस्लेशन की. सेकेंडली, कोई जुडिशियल, कोई जज का डिसीजन, कोई सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट केस लॉज डालने पड़ेंगे. एंड थर्डली, डॉक्ट्रिन्स, ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इनका रेफरेंस आप दे सकते हो. एंड यही रूल में आ जाता है कि इशू का आपने टाइटल लिखा, उसके बाद बैकिंग किसे देनी है, रूल से. आर्ग्यूमेंट, अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आपके पास लॉ आ गया, आपको इशू पता है, आपके पास फैक्ट शीट है. इन तीनों को कंपाइल करो. अपने आर्ग्यूमेंट्स आपने फ्रेम किए कि PIL क्यों फाइल होनी चाहिए, बिकॉज PIL शुड बी फाइल्ड बिकॉज in this particular case, in our present case, NGO XYZ have fulfilled all the prerequisite as it is rightly mentioned in para 2 of mood problem, and in the case of this and as per section this. Understand this thing कि अब आपने केस का बैकिंग दे दिया, आपने अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया. उसमें आर्ग्यूमेंट का मतलब सिंपल सा है कि आपको सारे लीगल बैकिंग्स, आपकी फैक्ट शीट को यूज करके मूड प्रॉब्लम के फैक्ट्स निकाल के, और आपके खुद के आर्ग्यूमेंट जब आप कंपाइल करते हो तो वो आर्ग्यूमेंट सिंपल से बन जाते हैं. अब आर्ग्यूमेंट बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, जो कि शायद इसमें तीसरा या चौथा पॉइंट लिखा है, थर्ड पॉइंट, विच इज मैगजिम्स नहीं लिखने हैं ज्यादा. राइट, मैगजिम, इट शुडंट लुक लाइक कि आप बस फैंसी वर्ड्स यूज करे जा रहे हो. राइट, you use some 10-20 maxims in a single paragraph, that will not anyhow look good and only act disadvantageous and negative for you as a participant in a mood court competition. You can use maxims any day, 3 or 4 maxims in a particular issue of 3 or 2 pages, but consecutively using maxims like in a para you are using 3 maxims, so वो negative factor act करेगा आपके लिए. Now कंक्लूजन, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ IRAC, इज कंक्लूजन. आप कंक्लूड करो अपने आर्ग्यूमेंट को, जहां पे आपने ऊपर जो भी लिखा है इशू के अंदर, आप उसको कनेक्ट करो. राइट, आपका इशू ये था, लीगल बैकिंग ये थी, तो हेंस आपने प्रूव जो किया वो ये है. राइट, आई होप द IRAC रूल इज क्लियर टू ऑल, बिकॉज IRAC इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट विच every fresher has to follow while they are drafting their mood memorial for the first time. ठीक है, IRAC will help you a great. ये आपको स्ट्रक्चर बताता है किस तरीके से आपको जाना है. ठीक है, बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द मेमोरियल का मतलब सिंपल सा है कि साइटेशन एरर नहीं करने, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने. ये नहीं है कि आपने पेज 1 पे हार्वर्ड ब्लू बुक का 20th एडिशन फॉलो करा है और 16th पेज पे आपने फॉलो कर दिया ऑस्कोला फॉर्मेटिंग. स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग रखनी है, साइटेशन स्टैंडर्ड रखने हैं, बीच में आपको फ्लिप नहीं करने इश्यूज को. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग रखते रखते आपका मेमोरियल ड्राफ्ट हो जाएगा. फॉलो दीज ऑल रूल फॉर ड्राफ्टिंग अ गुड मेमोरियल. मूड कोड के बेसिक्स के लिए आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे टू ड्राफ्ट अ गुड मेमोरियल. जब भी आप कुछ भी ड्राफ्टिंग करते हो तो इन फैक्टर्स को दिमाग में रखो. राइट, कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज द प्लीडिंग. नाउ वी हैव नो अबाउट हाउ टू गो थ्रू अ मूड प्रॉब्लम. हमें देख लिया कि रिसर्चिंग का थोड़ा सा कैसे करते हैं, कैसे फैक्ट्स उनको सेपरेट करना है. वी हैव सीन दैट ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं. नाउ कम्स टू द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, D-Day, the pleadings, the oral rounds for the moot court competition. Okay, so no matter how confident a speaker you are, right,
कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर, मुझे पब्लिक स्पीकिंग के मैंने डिबेट्स भी जीत रखे हैं, सो आई नीड नॉट टू राइट एन स्क्रिप्ट, आई विल इम्प्रॉम्प्टू गो ahead and speak. Never do this mistake. Always write your speech for a moot court competition. When I say write, don't write full paragraphs. Remember, transcript का मतलब क्या है? How to write a transcript. आपने इशू लिखा, यूज कीवर्ड्स एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट. आर्ग्यूमेंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि आप यू कैन नॉट लर्न केस लॉज एंड यू कैन नॉट जस्ट रोट लर्न केस लॉज एंड लेजिस्लेशन कि एज पर 226 लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1961 इन ICCPR ऑफ यूनाइटेड नेशन, राइट? यू कैंट लर्न सच लॉन्ग टर्म्स. सो इसके लिए आप यू कैन राइट दीज थिंग्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर इन योर ट्रांसक्रिप्ट. आपको कीवर्ड्स लिखने हैं जिससे अगर आप फॉरगेट करते हो तो आप उनको देख के याद कर सको. राइट केस लॉज. सो ऑलवेज प्रिपेयर अ ट्रांसक्रिप्ट फॉर योर ओरल प्लीडिंग्स. इस पार्ट को स्किप कर नहीं सकते क्योंकि एनी हाउ जज आपको बहुत ग्रिल करता है. इन मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज द ग्रिलिंग ऑफ जजेस. Judges will grill you like anything. Consecutive question. I have seen in various moot court competition. आपके पास स्पीकिंग टाइम 10 मिनट्स होगा, जज विल आस्क यू क्वेश्चंस फॉर नियर अबाउट 8 to 9 minutes. आप अपनी स्पीच ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे. आप 3 इश्यूज बोलने आए थे, आप एक इशू बोल के चले जाओगे. जज एक्स्ट्रा टाइम भी कई बार नहीं देता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम दे विल गिव एक्स्ट्रा टाइम, राइट? सो फॉर दैट ओनली प्रिपेयर अ ट्रांसक्रिप्ट. ट्रांसक्रिप्ट का बेनिफिट ही यही है कि जब आप ट्रांसक्रिप्ट लेते हो तो फिर you will back on track. आप जज आपसे simultaneous question कर रहा है, judge will continuously ask you question, follow up question. So क्या होता है कि आप उस पोजीशन पे आते हो जहां से आप ट्रैक से जा चुके होते हो. What you were actually pleading, you miss out completely कि which part actually I was explaining to the judges. So to be back on the track, transcript play an equally important role. Now read aloud, that is a common tendency how you should actually practice, but time the transcript. एज आई सेड कि ग्रिलिंग बहुत होती है मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन में, सो टाइम हमेशा ध्यान रखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्पीकिंग टाइम 10 मिनट्स का है, तो आप जब अपनी ट्रांसक्रिप्ट की प्रैक्टिस करोगे तो रिमेंबर, ट्राई टू टाइम इट और फ्रेम योर स्पीच कि आपकी स्पीच 7 मिनट में कंप्लीट हो जाए. ऑलवेज लीव 3 to 4 मिनट एक्स्ट्रा फॉर योर स्पीच, क्योंकि उसमें जजेस फॉर श्योर क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, राइट? ग्रिलिंग होती है मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन, विच इज द एसेंस ऑफ मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन, विदाउट विच मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन डजंट sounds very interesting as well, right? So हमेशा अपनी स्पीच इस तरीके से टाइम करो कि आपके पास एडिशनल 4 मिनट्स हो मिनिमम, बिकॉज जजेस कैन आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, राइट? एंड सप्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल, सिनेरियो आई हैव टोल्ड, यू कैन गो ahead and see various video of Oxford moot court competitions, Price Media Law moot court competition. Judges have grilled you, you have bring 3 issues. Judges have grilled you for 8 minutes. आपके पास 2 मिनट बचे हुए हैं. Now you cannot go through your original transcript, right? So as a backup, prepare a supplementary कि अगर worst case scenario में judges have grilled me to an extreme level, तो मैं क्या करूँ? Then in that particular case, bring out your supplementary or a what I say, that additional transcript. ठीक है? In that particular, it will act as a savior for you, right? That particular transcript, you will have to frame the content in such a way कि even if judge has grilled me, I can quickly sum up my issues in a span of 2 minutes or 1 minute, right? Then coordinating with the researcher. This is the most important part which a lot of people lack in the during the pleading round. Researcher कई बार तो pleadings में आते ही नहीं है, right? And since it's online, just make a utilize this for the benefit. Connect with your researchers, right? Each time there are very less number of chances that you are successfully able to answer the question of this every time judges ask a question. For example, there might be question कि give me the facts of this court. There might be question कि आपने कोई case quote किया, Nals versus Union of India. Judge might ask you that which court's judgment is it? Is it about Supreme Court judgment or a High Court judgment? And you are not aware. So passively be connected with the researcher also, right? That is where the researcher plays an important role. In the offline format, a researcher is allowed to pass chit to the speaker. But in the online mode, you can adopt various techniques. You can connect him on WhatsApp. You can just sidewise have a connection. He can simply text you, right? So researcher have a really, really active role while you are pleading. You cannot just passive sit idle and leave all the things on the speaker in itself, right? And remember, there are a lot of time judges ask question from the researchers as well during the pleading. For example, in the last tournament I have been to, judge has paused us and asked that where is your researcher, we want to ask a certain question about particular thing, right? So even if the researcher doesn't have very active role, judge asks various questions to the researchers.
right? So it is really important for everyone, that researcher, whosoever is going as a researcher, that they should be really active, not throughout the drafting, but also in the pleading as well. Yeah, last and but not the least, watch videos. You can simply see, or I'll send the link to the moderator. He will just simply send you on your WhatsApp groups, in whichever groups you are in part of, right? So you'll receive some link. There are some extreme and very talented mooters which are the finalists of Oxford Prize Media Moot Court competition at international level. You'll see how actually these pleadings are done. Observe them, observe the small nuances, observe the mannerism they are adopting while in the moot court competition, and what they are actually following. And you can, like, because video will help you grab majority of things with the closest look possible, right? So do watch them. I'll share the links with you as well regarding that, so it will help you in getting a better idea and picture about the pleadings in the moot court competition. Yeah, so all right, that was it. There was a slight network issue in between, so sorry for that. Right, so with this, I guess, yeah, I'm opening the room for the question answers. So anyone, if you have any question, you can just simply unmute yourself, right, and ask your question. I'll just quickly open the chat as well. Moderator, please, if anyone raises his or her hand, do unmute him, her, so we can just quickly take his question. Yeah. Mhm. Guys, just wait for a second. I'll also look at the chat as well. Till then, if you have any question, you can simply raise your hand. Monitor will unmute you and you can ask your question. Any doubt regarding moot court competition or debate competition, anything? Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, could you please share a format, like how does the drafting memorial, moot memorial look like? Okay. Okay. All right. No issues. With the links of the certain videos, I'll also share some sample memorial to the Sai. He will share all those things with you guys, right? A sample kind of memorial, or I'll do one thing. I'll share one of the best memorials, so you can have a look on it how to draft a good memorial. Thank you, sir, so much. Yeah, most welcome. Yeah, guys. Now I'm able to see the chat as well. Yeah. Sorry. Hello, sir. This is Harshita. Okay. Hi, Harsha. Hello, sir. Sir, so as you busted some myths regarding the moot court competition, another myth or assumption that I have is regarding the international moot court competitions. For example, now I'm going to participate in a SARC international law moot court competition, and there they say that that case laws and more than the case laws, the statutes have more power in the index of authorities in the memorial. So what is the right way of going about it? Research is definitely it, but how do we know that we are sure that our research is going in the right direction? Okay. Harshita, may I know the theme for that SARC mode code competition you are participating? Sir, it is regarding international criminal law. Okay. All right. Right. So when it comes to moot court competition, international moot court competition, the statute always play a bit more important role, but there is not as such prioritizing, right? Whether statute or let's say judicial precedent, or when we look all these frame all these things together, there is nothing as such that which is holds more or better priority than the other, right? Yes, sir. Everything, whether it's a judicial precedent, whether we look for any landmark judgments, or let's say any statutory or any doctrine or any treaty for that matter, right? So these all play an equally important role, whether it's a SARC mode code competition or any other big mode code competition. But all I'll suggest that if it's on international criminal, use maximum possible doctrines, right? Use maximum possible
right? Okay, sir. Right. There are various doctrines, like there is parallelism of treaties, right? Use concepts like so what are the issues, if you could tell me what is the first issue of your moot court competition? So we are actually, it would be great if you could also share your contact details over here so that we may Yeah, I'll contact you share in my case of mail any. ID with you. Yeah. Yes, sir, All sure. right. So yeah. Uh, yes, sir. Actually, today only we have got the notification that we have been notified with this moot court competition. So yes, we are still to figure out the issues yet. As you said, the 5 times reading rule. So we'll Yeah. definitely follow that. Yeah, great, great, great. And so it is Not my first such moot court competition. So I'm a yeah, bit anxious. yeah, no issues, no issues. It's not about first you are going for an international mode code company. That in itself is a good thing and a big thing. And just don't hesitate. Just follow the basics clearly, right? In a mode code competition, follow the essential, right? When it comes to international mode code competition, when you frame your issues, use some terminologies, right? Unlike the national mode code competition, where our issues are very simple, whether the PIL is maintainable, whether the code fall in this jurisdiction. In the international moot court competition, like your moot court competition fall under the jurisdiction of international court, criminal court, right? Yes, sir. Right, other like fall under the ambit of international court of justice. So what we can adopt, our issues should be framed like some complicated terms. They sound complicated, but their meaning are really easy. Like there are ratio on a matria, ratio on a person, ratio on a person, right? Ratio on a person, international criminal court moot court competition, Hague, Netherlands, of any year. That will help you to a great extent. Okay, Okay, all right. sir. All the best Thank you for so that. much, sir. Yeah. So guys, any other question if you have Sir, I have about a this? question. Yeah, yeah, please go ahead. Sir, where do we find the notifications of all these national and international moot courts? All right. Again, there are various organizations currently who are doing the same and promoting and let's say notifying the audiences at a larger extent. Some of them, if I have to name, are the Logtopus, NoticeBart, Kacheri.in, and various other organizations. You can just follow these three organizations. There are various groups they are having, right? As far as I remember, Logtopus and Kacheri.in have their WhatsApp groups. So you can get regular notification and updates about these events, whatever moot court competition, mediation competitions, or any extent of debating or any other competition, if there are any, you'll get easily notified about these competitions. Right. Platforms, you can just simply Google them, you'll get about the information about these upcoming events. Okay, sir. Yeah, so any more questions? Sir, which three website you have told to look after? Yeah, you can look up to Logtopus, NoticeBard, and Kacheri.in. Right. So I guess I have already dropped my mail ID in the chat box as well. Right. So in case you have some problem regarding your mood proposition or any such thing, you can just mail me your doubts or query. Okay, moderator, please look after the persons who are raising the hands, if there are any. All the participants can unmute themselves and ask the queries directly. Yeah, Himani and Arnav, I guess your hand are raised. So You can unmute yourself. Good evening, sir. yeah, Himani this side. good evening, Himani. Sir, I'm a first year student, so should I take a course on moot court competitions of since I don't have any sources or our college don't provide as such training about in this sector. So what should I do? Okay, okay. Himani, if you can tell, is it feasible if you could tell us that from which college are you? Yeah, sure, sir. I am from MIT University, Raipur. Okay, okay, okay. Yeah. So
it's okay if you didn't have that good alumni base or let's say guidance from the college authorities. It's completely fine, right? So for a moot court, what you need to do, because there is no as such, anyhow a college needs to start this culture. Why not you should only start this culture in your college, right? Go for some big tournaments, right? Win those tournaments and start this culture of mooting in your college. And for the guidance part, what you can do, just clear your basics, right? Just focus on the basics part first. Go and participate in some national level moot or international moot level moot based on your interest. Like for example, if you have an area of interest in criminal law or any other moot court competition, just go ahead and participate in it. You might make a lot of errors in the first time, but that will only improve you, right? That will make you learn a lot of things, and you'll found yourself at a position far much more better than your colleagues and the friend circle, right? I hope it answers your query. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, most welcome. And regarding the mood court help, if you guys need any help, like Himani, if you are participating in some tournaments, right, in that particular case, you have any doubts like how to start that particular mood, how to go through, read, how, which are the material and material facts. So you can just mail me that those queries. I can surely look after that if I'm free during those times. Right. So yeah, anyone more was raising? I guess Arnav was raising a hand. So did you have any query? No, sir, I forgot to lower my hand. Yeah, it's okay. It's okay. All right. So any other queries, but all the participants? All right. Considering since everything is clear now, moreover, I'll share the link of some of the pleading videos along with a sample best memorial of a particular tournament. So you guys can have a look on both these things, which will help you not only in pleading, but also how to draft a good memorial. Right. So yeah, that's it from my side. All the very best for your upcoming tournaments. Have a good day. Thank you, each and every participant, for coming to this webinar. I hope you guys learned a lot about debating and mooting. Thank you so much.